कहाँ है? ओह, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है ना, देखना था मेरे को यार। पार्टिसिपेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? किस में आते हैं रमेश? किस में आते हैं? जो वहाँ से बड़ा होगा ना, उसको उसको कोने में। हाँ। ओ, और यूट्यूब वाले? छोटा कर रहा है। वो बीच वाला, बीच वाला। और यूट्यूब वाले? इधर इधर से बड़ा कहाँ है इस पे? आपको नहीं दिखेगा। इधर से आप लोग वो साथ है हमारे, ठीक है। स्टार्ट। शुरू कर दूँ ना इसको? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून इब्राहिम। गुड आफ्टरनून अनुष्का। यस गणेश। Okay, Somadip. Okay, that's fine. If you are able to join it through the YouTube, that's okay. No such issues. ठीक है. So we are going to start the current affairs for the month of June and July, and especially the environment related current affairs. We are going to, in the next 2 to 2.5 hours, we will discuss the environment current affairs from the month of June and July. Okay. Yes, Ajay, good afternoon. Okay, one more thing is that students, last time Shabir sir has told all of you that whenever you are taking these sessions, the current affairs sessions, you all are supposed to make some folders for different topics. I hope you remember that. Yes, Sachit, good afternoon. Do you guys remember what Shabir sir has told you while what you have to do in terms of making folder and all? Ganesh is doing. Ibrahim says, Anu, yes. YouTubers, students on YouTube, are you aware of the fact what Shabir sir has told you guys, that you need to arrange these topics as per their themes, and you have to make some classifications like climate change. In climate change, there must be 3 more subfolders. One would be the climate finance, other is climate change and mitigation, and climate and treaties. Okay, the another folder what you have to make is that is of pollution. Yes, thematic notes, biodiversity, disaster management. ठीक है, such things were told. Forest. Do you guys remember that, or are you following those instructions? Are you guys following that instructions? If you guys are following that instruction, that okay, then we will proceed further. Or if somebody has a doubt okay, what exactly you guys have to do, please let me know so that I would make the things more clear for you. Batao. If I have to make it more clear for you, please let me know. बताओ यार, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी. Do I have to repeat what Shabir sir has told you guys, or you are aware of that? You don't need any address regarding that. Okay. So what you have to do is, Shabir sir has, in the last class, he had said the same thing,
that all of you are supposed to make the folders as per their themes. Like in climate or in environment topic, there are multiple themes that have been recurringly asked in the UPSC exam, like climate change, forest, biodiversity, water pollution. ठीक है, disaster can also be a part of it, energy alternatives, or if some topic is there which doesn't fall in any of these themes, you can make it in a, you can list it in a miscellaneous. ठीक है, so do one thing, make a theme for climate change, and in climate change there are 2-3 categories also, like that can be climate change and mitigation, climate change and finance, climate change and treaties. Okay, next, the next module would be pollution, biodiversity, forest laws. ओके, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी. नो, दिखाई नहीं दे रहा रेड कलर. इज इट विद देबरगा ओनली और nobody is able to see it? Do I have to write bigger alphabets और ये कुछ रिफ्लेक्शन का इशू है? What is the issue? ये दिखाई दे रहा है? Is it visible? Very light visibility. ऐसा क्यों हो रहा है यार? सर डार्कनेस इंक्रीज कीजिए थोड़ा. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. वेट, मुझको दिखाई नहीं दे रहा यार. वो कह रहे हैं लाइट ज्यादा पड़ रही है. लाइट का इशू है ना, लाइट की रिफ्लेक्शन है ना, वो ज्यादा पड़ रही है. ठीक है, जैसे ऐसे देखो, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा. दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? दिख रहा है? इतने दिख रहा है. पेन की थिकनेस कैसे इंक्रीज होगी? ये है कि पेन की थिकनेस इंक्रीज होगी. ये तो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस इंक्रीज होगी. थिकनेस कैसे इंक्रीज होगी? नहीं, इसके ऊपर लिखना होगा, फिर करेंगे. यहाँ से उठाएं पेंसिल, ही कह रहे हो तुम? ये पढ़ा कर लो. चल रहा है ये. आ रहा है. मिटेगा. ओह चलो, यही मिटेगा. Okay, students, please tell me, are you able to see now? Look at this. Edukemy. Is this one clearly visible? Okay, now you are able to visualize it. ठीक है, fine. That is what I want to convey, whether you are able to get that or not. ठीक है, means I have to write in this होना. ठीक है, overall. So I was saying that you have to list out all these topics as per the module or as per the themes that have been repeatedly asked in UPSC. Do one thing, sir, which months are we going to cover today?
Today we are going to cover the month of June as well as half of July. ठीक है? You have to make a folder in which you have to list out the topics as per the themes. The one important theme is climate change. In climate change, you have climate change mitigation. You have climate change finance and climate change treaties. Okay. Apart from that, there is another important theme, that is biodiversity. ठीक है? Another is forest. Pollution. Forest and environmental laws, in fact. ठीक है? Apart from that, the other theme, that is energy. Energy and energy alternatives, or the points or the themes which cannot be included in any of the given themes. You can include them in another topic, that is miscellaneous. ठीक है? उसको डाल लेना आप miscellaneous में. ठीक है? In this manner you have to make 6-7 themes so that you should know कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं that topic lies in which theme. ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग you have to prepare also the theme which has been repeatedly asked, theme which accounts for more marks in the UPSC examination, that needs to be focused upon more than the other themes. Okay, so without wasting a time, I think we should start. And should I go slow or should I can go according to my pace, because I want that I should go a bit of pace in this particular session so that we would be able to complete it. Okay, Debarga. Anyone else who has some difficulty in keeping a pace with us, or he or she wants us to go slow? Because according to my idea, I feel that these are the current affairs and all these contents are already available in our website also, as well as in some other websites that you guys might be following. ठीक है? तो बहुत ज्यादा स्लो करके धीरे धीरे चलने का, that is of no utility. What do you think? Can I go fast? Yes, बताओ, कुछ लिखो. Slow, fast. ठीक है? I think most of you guys agree with my view. Voice issue. Is this a voice issue with you, Ashvi, or is it with everyone? I don't think that this is a voice issue from our side. Might be there is some technical flaw on your end, so please rectify it. Okay, Ganesh. Okay, everybody is comfortable with that. ठीक है? तो start करते हैं. The first topic that we are going to cover today is this one. This is the topic, that is small island developing states and climate change. Okay, this was the topic that was asked, and this has been picked from the Down to Earth, a magazine that is especially for the environment related affairs. So the news is that Panama became the first nation to evacuate the island community over the climate impact. As you guys are already aware of this fact that climatic impact is more severe and the threat that is related to the climate change. Okay, thank you, Uttam. Voice is clear. Good. So I was saying that Panama has become the first nation in the world that has evacuated its indigenous communities. Okay, and you know, mic issue. I hope अब नहीं होगा mic issue. ठीक है? So I was saying the indigenous communities in Panama has been displaced from their
places, and Panama has become the first nation where such event has taken place. ठीक, उसके रिगार्डिंग अगेन एंड अगेन आई थिंक ये तो न्यूज में होता ही रहता है, सुन ही रहे हो कि द क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग मोर सिवियर, ठीक है, एंड लॉट ऑफ क्लाइमेटिक रिलेटेड इंपैक्ट्स आर हैपनिंग स्पेशली to those nations which are considered as the island nations, because island nations are the nations which are more vulnerable to any change in the sea level or any change related to the ocean. तो उसमें भी वही हुआ है. और जो communities थी यहाँ पे that has been displaced, उसको मैं बता देता हूं कि that was Guna. Guna was the name of local community that was displaced from their positions, or that was displaced from their places. ठीक है. Small island developing states. अगर मैं एक लाइन में if I ask what is the definition of that, so can anyone tell me what exactly is the definition for small island developing states? As the heading or a name is clearly suggesting, but if you have to write it in one line or two lines, so what would you write? Bhumika, after class we are getting this. Yes, this PDF will be shared with you, Bhumika, but this PDF contains only the topics that I have to discuss. ठीक है, there is no such information or a detailed notes available in this PDF, so you have to note it down for your own convenience. Although it is on a YouTube, so you can also write down later, but it's as per your wish. Island nation of Indo-Pacific, largely coral islands, but this is not necessary, Debarga, that these nations are only in Pacific. Small islands which are in their developing states. Okay. ठीक है. Overall, these small islands are the islands. एक वर्ड नहीं भूलना है इसमें कि which are facing the challenges in sustainable development. ठीक है. These are the territories or territorial areas which are facing the challenges of sustainable development, and along with the social and economic, the environmental vulnerability is highest, or the degree of environmental vulnerability is more in these islands. ठीक है. These islands have been suffering from the environment vulnerabilities. ठीक है. दूसरी एक चीज और इसमें जो एक की पॉइंट है, ट्विस्ट है, कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, बट आइलैंड वर्ड है यहां पे, बट देयर आर सम कंट्रीज विच आर नॉट द आइलैंड, देयर आर सम कंट्रीज विच आर नॉट कंसिडर्ड एज आइलैंड, बट स्टिल दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. एग्जाम्पल इज बेलाइज. बेलाइज नाम तो सुना है ना, बेलाइज, सरीनेम. हाँ बताओ, नाम सुने हैं ना. यस, दे आर इन सेंट्रल अमेरिका. ऑल्दो दीज कंट्रीज आर नॉट द आइलैंड, बट स्टिल दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट यू नीड टू नोट डाउन, बिकॉज देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस line can be asked in the UPSC examination straightforward, because lot of people might be thinking कि भाई island है तो सिर्फ island ही आएंगे, वो वाली countries नहीं आएंगी जो they are not island. ठीक है. you might be thinking कि मॉरिशस आएगा, मालदीव्स आएगा, ठीक है, फूजी आइलैंड आएगा, तुवालू आएगा, but these countries although they are not the island but still included in this category. ठीक है. इसके अलावा 4 conditions हैं, or you can say there are 4 features of small island developing states. One is that these remote islands, these small island developing states, they are remote. ठीक है. They always have a remote location, means getting access to these places is always a tedious task. Another point is limited economic opportunity, limited economic growth, you can say. ठीक है. as the number of population is also less, so obviously the growth in this particular area is also limited. ठीक है. The third point is that these small island developing states, they are more depending on oceanic resources.
और मरीन रिसोर्सेज। ठीक है, these island states are depending on marine resources, their economy survives on the marine resources और oceanic resources। oceanic resources क्या होते हैं, you already know that। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज थोड़ा सा अलग भी है, that these all these countries are not the part, or we can say that these countries are not considered to be the beneficiary of loans, concessional loans। ठीक है, ये एक बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा पॉइंट है, बट यस दिस इज रियलिटी दैट दीज कंट्रीज कैन नॉट गेट एनी कंसेशनल लोन्स बिकॉज ऑफ their income, as the income of these countries are very low, so they have been excluded from the category of giving the concessional loans, although loans can be given by the World Bank, but only in case the situation is extremely grim, if there is some extremely or emerging situation। ठीक है, बहुत emergency जैसा कुछ हो गया, the contingency हो गई, then only these countries will get the concessional loans, else they are not in the list of those countries which can get the loans at the concessional rates। ठीक है, तो पनामा उस कंट्री उस सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत कौन से हैं वो पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली, what would be the impact? Sir, please explain once fourth point. Fourth point is, Ganesh, that there are a lot of countries who are getting the concessional loans from the World Bank and other institutions। ठीक है, but these small island developing states are not getting the concessional loans from any of the organizations because of their income issue। ठीक है, because entirely the economy is dependent on marine resources, so obviously these countries are the poor countries, or you can say the least developing or the least developed states। So obviously the banks, multilateral institutions, they always have an apprehension कि अगर हम इन्हें लोन देंगे तो whether we would be able to recover it or not, so that's why these are not included in the category of those countries which can get the concessional loans। ठीक है, अब impact क्या होंगे, the threat of forceful displacement। forceful displacement का तो पूरा ये टॉपिक ही है, that is Panama, जहां पे गुना committees have been asked to leave their places। और forceful displacement का एक और एग्जांपल भी है कि तुवालू, you might have heard about the तुवालू। तुवालू is an island, कहां पे है तुवालू, कोई बताएगा, कोई बताएगा तुवालू कहां है? यस भूमिका, व्हाट्स योर क्वेश्चन? यस इट्स पैसिफिक, बट किस तरफ? पैसिफिक तो बहुत बड़ा है, किस तरफ है पैसिफिक में? इज इट क्लोज टू अमेरिका, इज इट क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया और सम अदर कंट्री नियर चाइना, जापान, कहां पे है? साउथ अमेरिका? नो, नॉट एग्जैक्टली इट इज साउथ अमेरिका, आई वुड से इट इज क्लोज टू द ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी। Yes, yes, Pooja, you are right. It is just to the east of Australia, or precisely I can say that it is the east of Papua New Guinea। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट में। ठीक है, तो देयर इज अ आइलैंड दैट इज टुवालू। दिस आइलैंड हैज ऑलरेडी शोन दैट इट इज गोइंग टू सबमर्ज, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स दे आर सेइंग कि बाय द एंड ऑफ 2050 दिस आइलैंड वुड बी कंप्लीटली सबमर्ज। Completely it would be submerged, and so there would be a situation when the Tuvalus, the residents of Tuvalus, would have to be relocated to some new place। Already this Tuvalu has entered into an agreement with Australia। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है कि a place has to be reserved for us, that in case there is any exigency or if there is any such situation occurs where we have to relocate from our country, so please grant us asylum। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है रिगार्डिंग दिस। अ प्लेस हैज बीन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड दैट इफ समथिंग हैपेंस वी वुड शिफ्ट टू दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सदीराज, पैसिफिक एंड ऑल। ठीक है, ओके, दिस इज द थ्रेट ऑफ फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट। अनदर थिंग इज इकोनॉमिक इंपैक्ट।
इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे होगा? एज यू नो दैट दिस क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज और ओशन का एक बड़ा ही पॉइंट है जो बार बार न्यूज में भी आता रहता है बहुत ज्यादा, ओशन एसिडिफिकेशन. Ocean acidification, and if there is a ocean acidification, that is causing a threat to coral reefs. Coral reefs के लिए ultimate threat है, tourism के लिए threat है, and also threat for livelihood of coastal communities. ठीक है, and also for the livelihood of a coastal community. So you can say that yes, it would directly be an impact on the इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज, स्पेशली जो कंट्रीज हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स वाली, वहां पे ज्यादातर जो रेवेन्यू है दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम द टूरिज्म. ठीक है, दे आर द वंस हु आर गेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग. ठीक है, ये सब टूरिज्म की वजह से वहां पे आ रहा है, और इनफैक्ट अगर ये सब हो गया तो देयर टूरिज्म और देयर रेवेन्यू वुड बी हाईली इंपैक्टेड. मरीन इकोसिस्टम्स विल बी इंपैक्टेड. यस, वही बोल रहा हूं कि as the marine ecosystem is going to be impacted, so it would have a dent on the livelihood of coastal communities. ठीक है, disproportionate impact on indigenous population. indigenous population का एक डेटा है that says कि जो total population है वर्ल्ड की, उसका 1% population ही indigenous population है. Only 1% population is the indigenous population, and these indigenous population have a strong attachment with their local places. So obviously the impact would be more on them. और दूसरी बात ये है कि जो वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड में whatever the advantage, whatever the innovations, और जितनी भी हम जिसको ग्रोथ बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इंडिजिनस पॉपुलेशन तक पहुंचे भी नहीं है. दैट हैज नॉट इवन रीच टू द इंडिजिनस पॉपुलेशन. मैक्सिमम जो भी एडवांटेज हुआ है, जिसको एक्सप्लॉयटेशन किया है हमने, whatever exploitation the human has done to the environment, the benefits that have arisen out of it all have been accrued to those who are non-indigenous population. तो इसलिए disproportionate impact होगा indigenous population के ऊपर, because their livelihood, their everything relies on the nature, और nature ही सबसे ज्यादा इसमें disturb हो रहा है. ठीक है, next is the climate injustice. climate injustice कैसे होगा? climate injustice कि भाई indigenous population है, they will be uprooted. Yes, they will be uprooted from their local and traditional ways of living. हर indigenous population का एक अपना तरीका है that how they are living in their native places. So they will be completely uprooted, or they will be completely isolated or alienated from their own culture and all. So that would be a climate injustice to them also. One more point in this is that जब बार बार एक you might have heard के developed countries have pledged to provide $100 billion of funding to the for climate mitigation and adaptation measures. सुना होगा ये सब के $100 billion देंगे. ठीक है, उस $100 billion में से only 1.5% of $100 billion, that is $1.5 billion, is only have been given to these indigenous populations. So that is also a climate injustice with them, because you know who is responsible for this climate devastation? It is only the developed countries. ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ने जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है दे हैव रैम्पेंटली एक्सप्लॉइटेड द एनवायरनमेंट, एंड नाउ द ब्रंट हैज टू बी borne by the this indigenous community. Stockholm reports more than 50% global warming by 1% of rich. Yes, that's fact, that's true. क्योंकि रिच और एलीट क्लास जो है दैट इज they are the ones who are responsible for emitting more greenhouse gas emissions into the climate. पुअर कहां पे निकाल रहा है धुआं? पुअर कहां से निकाल रहा है? ऑल्दो पुअर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल अप टू सम एक्सटेंट, बट जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द एलीट क्लास और द रिच क्लास. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर वुड बी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द हेल्थ. हेल्थ पे भी इंपैक्ट होगा. यू नो हीट स्ट्रेस were most of them historically colonized, reducing their economic potential. Yes, most of them were historically colonized. They have been the colonies of some of the European countries. Plus their reliance, even though if they are not the colonies at the current time, even if they are not the colonies, still the people living in those islands are living a very primitive form of life.
ठीक है, तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ जो जी रहे हैं, इवन अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे अंडमान निकोबार आइलैंड, इवन तो इंडिया तो अब काफी डेवलप हो गया है, काफी आगे चला गया है, and the world is looking upon India as to be a global power of 21st century, but the people or the tribes that are living in these Andaman Nicobar Islands, they are still living a very primitive form of life. They even don't want to be in touch with the outsiders. ठीक है, तो उस तरह का ही island developing states का भी हाल है, that indigenous population don't want to get interact with the outsiders. ठीक है, तो adverse impact होगा health के ऊपर, obviously adverse impact होगा. To have been this, you have been coming across these words: heat stress, vector borne diseases. ठीक है, तो ये सब चीजें बढ़ेंगी आने वाले टाइम में. The numbers of these are likely to increase in the future also. Vector borne disease हो गया, heat related stress हो गया, heat waves. Okay, all these points. So that is going to impact on the health also. Health की बात करूं तो vector borne disease. Vector borne disease means like disease like dengue. ठीक है, another is heat related stress or heat waves. You can say marine heat waves. They are also responsible for the death of marine organisms also. ठीक है, another is access to drinking water. This would also be an issue in the coming days for them. The classic example is Bahamas. Bahamas का तो नाम सुना होगा, बॉलीवुड के तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपना हनीमून हमेशा बहामास में जाके सेलिब्रेट करते हैं, सुना भी होगा आपने बहामास. तो बहामास इज अ कंट्री which is reeling or which is suffering from a water scarcity issue because the entire territorial area is subsided. So obviously the water is entering into the territories of Bahamas, and sea water intrusion, sea water has been intruded in this particular country, and due to which the groundwater has been contaminated or it mixed with the salty water. So the water available in the Bahamas is now not fit for a drinking purpose. So this is what they are saying, that there would be a problem related to access to drinking water. Okay, next is the agriculture and food security. Yes, agriculture and food security would also be another issue, क्योंकि आप जानते हो कि recurringly क्या हो रहा है, recurringly there is extreme weather related events. Extreme weather related events are cyclones, storms. ठीक है, these weather related events are continuously disrupting and disturbing these places. Okay, there will be a more reduced soil moisture. There will be reduced soil moisture, more evapotranspiration. ठीक है, all these factors contribute to the decline in agriculture and food security. So this will also be another threat for the people living in these countries, that is small island developing states. ठीक है, next is Bridgetown. Bridgetown एक initiative था that was initiated by Barbados. Barbados एक छोटी सी कंट्री है, बहुत ही small island developing state है in the Caribbean. Barbados. ठीक है, Bridgetown Initiative 2022, where all these small island developing countries have convened a meeting and they have urged the developed nations कि आप हमें एक stimulus package दो. Please grant us a stimulus package so that we could develop our sustainable development goals, to develop their own sustainable development goals. ठीक है, इसके लिए जो है they have T20 World Cup was held here. Yes Ganesh, T20 World Cup was held in USA, Barbados and some other islands. ठीक है, yes. ठीक, फिर what they are saying in a way forward that nature based solutions के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. yes, good afternoon nature's beauty, अलग ही नाम रखा है आपने. ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. व्हाट कैन बी द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस? प्लीज कैन एनीवन सजेस्ट अस? और whenever you are talking about these devastations that are related to
climate change and all. So always include the component of nature based solutions. This is the one solution. Mangroves, coral restoration, yes, you are right. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए मैं कहूंगा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट. ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट क्या है? ये सुना होगा नाम. ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट मींस रीस्टोरिंग द डिग्रेडेड मैंग्रोव्स, कोरल्स, ठीक है, सी ग्रासेस एंड ऑल. दीज आर द nature based solutions. And if somebody wants to implement these nature based solutions in a best possible manner, the good idea is to incorporate or to involve the indigenous population along with the planning that has been framed by government. Indigenous population को, locals को अपने साथ लेके चलें so that nature based solutions could be implemented in an optimum manner. ठीक है, क्योंकि nature based solutions कुछ ऐसे solutions हैं जिनकी नॉलेज लोकल लोगों को ज्यादा है. ठीक है, दैट इज व्हाई द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैव बीन प्रमोटेड. ठीक, उसके अलावा देयर इज वी शुड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा. कि द कन्वेंशनल फ्यूल दैट इज दिस ऑयल एंड पेट्रोलियम, दे आर द वंस व्हिच आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर ट्रैपिंग द hot air. So obviously the impact would be more, or impact would be less severe if we are going to promote renewable energy. चाहे इसमें wind ले लो, solar ले लो, ocean thermal energy conversion etc. ठीक है, so all these initiatives have to be taken. Sachit is saying blue what? Blue I was talking about कि ये था कि nature based solution में जो ocean है, that is blue carbon project. Blue carbon project means because ocean is the absorber, or you can say the oceans are also carbon sinks. They are absorbing around 30% of the carbon or carbon dioxide that is attributed to the anthropogenic emissions. ठीक है, तो ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट को करें जहां पे रीस्टोर करना होगा हमें. ब्लू मीन्स वाटर. ठीक है, so we have to restore all those ecosystem that are under the water. So that is why we are calling it blue carbon project. Restore करें degraded mangroves को, इसके अलावा corals, tidal and sea grasses. Okay, all these have to be restored for better ecosystem. ठीक है सचिन, did you get this? ठीक है, फाइन. अनदर इज द यूएनडीपी इनिशिएटिव. यूएनडीपी का इनिशिएटिव है दैट प्रॉमिस फॉर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज प्रॉमिस, इसको बोलते हैं. यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव है फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, क्लाइमेट चेंज प्रॉमिस. ठीक है, क्लाइमेट चेंज प्रॉमिस, दिस इज अबाउट कि हाउ दीज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स implement their nationally determined contributions. ठीक है, this is United Nations Development Program. UNDP means UNDP has taken an initiative. The name of the initiative is Climate Change Promise, where they are helping and assisting the small island developing nations so that they could attain the nationally determined contributions. Nationally determined contributions क्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ मुझे. What are the nationally determined contributions? Paris agreement है, but what exactly is the nationally determined contributions? ठीक है, is the part of targets to be achieved by countries. Yes, basically every country has made some commitments that they would reduce the CO2 up to this level by 2030, they would reduce this up to this level 2050,
ठीक है, they would have humongous investments in the renewable energy infrastructure up to the tune of इतना इतना crores, ठीक है. These are some of the nationally determined contributions. और हर स्टेट का मींस हर कंट्री का एक अपना ही nationally determined contribution that is different from the others. So small island developing states have also framed some sort of nationally determined contributions, and UNDP, that is United Nations Development Program, is helping them, extending a helping hand to them so that they could achieve this target. ठीक है, इसमें इतना ही है. Next is the next news, that is this one. ये है news. Anyone wants to ask anything regarding this small island developing states net zero target by 2070 for India? Yes, Debarga, you are right. Yes, anyone wants to ask anything regarding the previous topic? Small island developing states, 4 important features of these states. The most important one is that they are not beneficiaries of concessional loans that is extended by multilateral institutions. Apart from that, the other important thing that you need to note down is that it is not necessary that these countries need to be the islands. Even the Belize is also a part of the small island developing states, despite the fact that it is not an island. Suriname. Okay. बाकी मैंने बता ही दिया कि impacts क्या क्या होंगे इनके. Tuvalu का जो है, they have made an agreement with Australia that if any exigency or if any emergency occurs, then please grant a space for us also so that our natives could be relocated to this place. Yes, बताओ कुछ पिछले टॉपिक में कुछ है या कैन वी मूव फर्दर? कोई बताएगा नहीं? ओके, नेक्स्ट टॉपिक. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडियन हिमालयन रीजन. ठीक है, और इसको मैंने क्यों पिक किया है? ऑल्दो द न्यूज वाज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेल्स द वे इन हिमालयाज डेवलपमेंट. ठीक है, न्यूज ये थी कि इन व्यू ऑफ द सम ऑफ द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द न्यू फंडामेंटल राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट necessitates a sustainable development model for Indian Himalayan region. One is that this Himalayan region, it is one of the favorite themes of UPSC. दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, that is the concept of carrying capacity. Concept of carrying capacity. ठीक है, there is a concept of carrying capacity and the questions have also been asked on this particular concept also. That is the carrying capacity. In which file the SIDS will fall? Yes, you tell me. Climate change का मैंने कुछ बताया था आपको. Climate change related फाइल में ही आएगा SIDS. ठीक है, तो carrying capacity is a concept. कोई बताएगा मुझे what is the meaning of carrying capacity? कोई बताएगा? Maximum limit up to which nature can support. Yes, you are right. Concept of carrying capacity means to sustain maximum number of population without the degradation of ecosystem. Just wait. आपको वॉइस तो ठीक आ रही है ना? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है वॉइस में? हाँ देवर का वो ठीक है, बट कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है ना वॉइस में? अगर आ रही है तो प्लीज टेल मी. Stop and go determinism philosophy, that okay, that's okay, but that is okay Brian, no. ठीक है, the concept of carrying capacity means the maximum population that any ecosystem can sustain without its degradation. और recently हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि that right to be free from the adverse effect of climate change comes within the fundamental rights under Article 14 of Constitution.
ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बिकॉज दिस थीम इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस, कि हिमालयस के बारे में बार बार कुछ ना कुछ जो है वो पूछ लेते हैं। तो हिमालयस का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द, although there is nothing to be shared with you guys, that Himalayas is in tectonically active region. It is formed by the collision of Eurasia and the northward drifting Indian plate. ठीक है, one fact is that this Indian Himalayan region covers 18% of total geographical area of India. ठीक है, 18% एरिया जो है कवर करता है geographical area of India. What are the all of the advantages that we are accruing from the Himalayan system? क्या है वो, आप बताओगे मुझे क्या क्या है वो advantages? One is drainage system, drainage, because these Himalayas are called as the towers under thrusting of Indian plate under Eurasian. Yes, CC convergence. Okay, Debarga. Drainage is the one thing that this Himalayas is the source of some of the longest rivers of the world like Indus, Ganga, Brahmaputra. Yes, natural defense is the one. Natural defense भी लिख लेते हैं, ठीक है, डिफेंस। और ये हो गया ड्रेनेज, ड्रेनेज में हो गया है दैट इट इज द सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर सिस्टम एंड सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग द लाइवलीहुड ऑफ अराउंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का सस्टेनेंस है, चलता है यहां से, ठीक है। और बताओ, some ecosystem services, it is also extending the ecosystem services in the form of food, medicine, और क्या बोलूं, genetic resources, carbon sequestration, ठीक है, ये सब करता है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एग्रीकल्चर, यस एग्रीकल्चर, आई हैव इंक्लूडेड फूड, फूड है, मेडिसिन है। मेडिसिन के लिए अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट पेड़ का नाम भी है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी, एंड दैट इज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेडिसिनल क्रॉप्स दैट इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। टूरिज्म, यस द मेजर वन, ये भी इंपॉर्टेंट है टूरिज्म। टूरिज्म भी कई तरह के हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो कई तरीके के टूरिज्म है, दैट एडवेंचर टूरिज्म है, पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश, हरिद्वार यहाँ पे करते हैं लोग। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। इको टूरिज्म, ओके, ऑल दीज फॉर्म ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, दैट कैन बी अ रिक्रिएशनल फॉर एनीवन, ठीक है। और बताओ, और कुछ हो सकता है? क्लाइमेट रेगुलेशन इज द वन, जो आपने बताया नहीं, भूल गए। फॉर्मेशन ऑफ 4D मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स, यस इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ fertile plains of India, as the rivers that are coming from the Himalayas along with their flow, they are bringing the fertile sediments from these mountains, ठीक है, वो भी हो गया। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन भी है इसका, दैट कि अगर हिमालय नहीं होता तो देयर विल बी द कोल्ड विंड्स दैट आर ब्लोइंग फ्रॉम द आर्कटिक दैट हैव कंप्लीटली एंटर्ड इनटू द इंडिया, एंड इंडिया would not be the India as it is of today. It would have been completely transformed into a cold desert. Plus barrier climate regulation के नाम पे वहां से ठंड को भी बचा रहा है। Another is that the southwest monsoon winds gets orographic effect after deflected from the Himalayas, and the rain that we are getting these days is only because of the Himalayas. Had there been no Himalayas, these winds would have been blown and entered into the China and this South Asia part of world. Natural resource stocks, yes, it is a stock of natural resource we have already included in ecosystem services, ठीक है, वहां पे yes, it is also a third pole Debarga, because there are a lot of glaciers. That is what we have already written, drainage, that it is the third pole. It has a lot of glaciers that have become the source of water for Indus, Ganga, Brahmaputra, sustaining the livelihood of around 1.4 billion population, ठीक है। चलो, ये हो गए बेनिफिट्स उसके। और बताओ कुछ एडवांटेजेस, या ये बताओ कि अभी चैलेंजेस, मिनरल रिसोर्सेज, यस पूजा यू आर राइट, मिनरल रिसोर्सेज,
इट इज रिच इन सेडिमेंट्री मिनरल्स ऑल्सो। चैलेंजेस की बात करो, चैलेंजेस में आ जाओ, क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। जब भी एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे होगा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, लैंडस्लाइड इज ऑल्सो वन, ट्रू। मैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख रहा हूं, इसी के अंदर जो है लैंडस्लाइड भी आ जाएगा। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस यहां पे लिख लो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स। इसके अलावा यस, फ्लड्स बोल रहे हैं आप, ट्रू। सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग इज अनदर इशू। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड्स, यस ट्रू। अर्थक्वेक, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यस। EIA वायलेशंस, ट्रू। EIA वायलेशंस इज आल्सो देयर। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, क्लाउड बस्ट भी है, ठीक है। EIA का वायलेशन हो रहा है बार बार। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, DLS गेमिंग, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ क्लाउड बस्ट एंड ऑल, ठीक है। ग्लेशियर मेल्टिंग। और जब भी ये कुछ लिख रहे हो तो एक आध इसमें केस स्टडी भी डाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द केस स्टडी ऑफ लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ, लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ, याद होगा ये जोशीमठ में हुआ था, यस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ऑफ सिक्किम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ऑफ सिक्किम। केदारनाथ इंसिडेंट, यस। ICIMD रिपोर्ट, क्या कहती है ये रिपोर्ट देवर का? यस, इट इज ऑल्सो प्रोन टू अर्थक्वेक्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। एंड अर्थक्वेक्स के साथ जब लिखो तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर दो, दैट rampant construction of dams like Tehri Dam, rampant construction of infrastructure projects like Char Dham project, without taking into account the reasons that were specified by the environmental impact assessment report, retreat of glaciers in Himalayan, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हो रही है हिमालयन रीजन के अंदर। ऑल्दो रिवर्स वहां पे बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं, वाटर स्ट्रेस का इशू बार बार आ रहा है, स्पेशली इन द टूरिस्ट प्लेसेस, इवन इन लद्दाख ऑल्सो। और वाटर स्ट्रेस का जो एक डेटा भी है दैट के अराउंड यहां पे जो है स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स जानते हो ना, तो इन हिमालयन रीजन्स 33% ऑफ स्प्रिंग्स हैव ड्राइड, 33% of the springs have dried in Himalayas in the last since 1960s, 1960s से 1960s से अब तक 33% of the springs have completely dried, ठीक है। टूरिज्म एक अनदर चैलेंज है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग रिपोर्ट सेज दैट these states account for 10% of their revenues from tourism, mean 10% of the state GDP or revenue is coming from tourism for the Himalayan states. And tourist अगर टूरिस्ट वहां जाते हैं तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, अदर वेस्ट, ठीक है, वहां पे होता ही है। पॉल्यूशन फॉर टूरिज्म, यस सौमदीप, वो भी है, ठीक है, टूरिज्म का। तो अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूंगा तो वे फॉरवर्ड में क्या होगा इसका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल टूरिज्म हो। और इनफैक्ट अ रिपोर्ट वाज देयर व्हिच नीति आयोग रिपोर्ट वाज सेइंग कि दैट देयर शुड बी अ ग्रीन सेस, ग्रीन सेस होना चाहिए ऑन टूरिस्ट दैट आर कमिंग टू विजिट एंड एंजॉय एट दीज प्लेसेस, ठीक है। ग्रीन सेस का एक ऑप्शन हो सकता है। और बताओ वे फॉरवर्ड में और क्या हो सकता है? Environmental impact assessment needs to be taken seriously. Environment impact assessment needs to be taken seriously. फिर से indigenous population को consider करो, that indigenous populations need to be the major stakeholders while framing any of the policies and taking any decision regarding the development of Himalayan region. कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ स्कीम्स भी हैं जो शुरू की गई थी। You might have heard about this secure Himalayas, सुना है?
implementation execution of committee reports in letter as well as in spirit. Yes, true. Tourism and crowd management. Yes, DLS gaming. Right. Secure Himalayas का सुना है? It was the scheme that was introduced to promote and conserve alpine pastures. Alpine pastures को conserve करने के लिए, so that the locals whose livelihood mainly depend on their animal rearing and other animal related livestock related activities, they don't have to migrate from their native places. ठीक है, सिक्योर हिमालयाज था. इसके अलावा एक और था ये हिमालयन रीजनल काउंसिल. हिमालयन रीजनल काउंसिल. This council was created by Niti Aayog. Niti Aayog has created this council so that all the Himalayan states can take a decision collectively by establishing a consensus between them in case there is any some mega project coming into their region and all. ठीक है, और कुछ है तो बताओ इसमें. ठीक, और कोई है इंपॉर्टेंट पॉइंट? आगे चलें. वन मोर इज देयर. एक और भी था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम. ठीक है. This was initiated to assess or to take the stock of vulnerabilities in the Himalayan region. ठीक है, this particular program was initiated so as to review and to assess the vulnerabilities in the Himalayan region. ठीक है, ये सब प्रोग्राम चलाए गए हैं, although implementation उस तरह से तो किसी की हुई नहीं है कि हम बोलें कि कुछ काम होगा. बस नाम के लिए कुछ ना कुछ चलाना था, तो they have taken a decision. Else entire decision has been taken by the political fraternity, that is the government, who have to decide what is good or what is bad. ठीक है, ये सब चीजें जो है वायलेशन होते रहते हैं इसमें. ठीक, तो दिस इज अबाउट द हिमालयन इकोसिस्टम. दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगेन एंड अगेन द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली रिगार्डिंग द हिमालयाज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी. और हिमालयाज जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड जा चुके हैं. ठीक है, दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी. दैट इज व्हाई दीज डिजास्टर्स आर हैपनिंग रेगुलरली. कल परसों भी क्लाउड बस्ट हुआ है मनाली में, है ना? तो देखा है, किसी ने न्यूज पढ़ी है? क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, दीज हैव बीन हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक, now we are moving on to next topic. Anybody wants to ask regarding Indian Himalaya system and all? Easy था, कुछ था नहीं उसके अंदर वैसा, but if you want to ask, please tell me if you have any question related to that. Okay, fine. Moving ahead, the next topic is Great Nicobar project. क्या थी न्यूज? This was in the Down to Earth, one of the magazines for the environment and disaster management. Great Nicobar project, the heading was social impact assessment and local community concluded without consulting original inhabitants. In this particular project, original inhabitants of this Great Nicobar project have not been consulted while this entire project was being designed by the government of India. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या है. ये ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है, दैट इज सून गोइंग टू बिकम अ रियलिटी इन दिस एरिया. और जो इसका लेआउट प्लान है, द लेआउट प्लान ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज बीन शोन हियर. दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज बीन शोन हियर. लुक एट दिस. सून एट ग्रेट निकोबार आइलैंड वी विल सी द इंटरनेशनल एयरपोर्ट हियर, international container transshipment terminal here, and other power plants, and township is also being created in this area. Township and area development. Look at this. This is a township and area development. This particular area would become a part of township.
international airport, container transport and a power plant would be built up here. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, निकोबार एरिया दैट इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहां पे. ओके, और बताओ और क्या फीचर्स हैं इसके. कैम्पबेल बे है, दैट इज इंपॉर्टेंट. गैलाथिया नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपबेल नेशनल पार्क. ग्रेट निकोबार पार्क इज ऑल्सो हेयर. एंड ग्रेट निकोबार पार्क, this Great Nicobar Park is a part of Man and UNESCO Biosphere Reserve Program. Okay, there is a program that is Man and Biosphere Reserve Program. This particular Great Nicobar Park is also a part of it, UNESCO initiative. ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सब लोकेशंस बता दी. इसके अलावा आई वुड से द ट्राइब्स, द लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन लिविंग हियर, दे आर शॉम्पेन, निकोबारीज. ठीक है, दे आर शॉम्पेन एंड निकोबारीज, और दे आर देयर एथनिसिटी इज मोंगोलॉइड्स. They are called as Mongoloids. ठीक है, ये सब तो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या एनसीईआरटीज में कि they are Shompen, they are Nicobarese and their ethnicity is Mongoloids. ठीक है. Now what is happening, और इसका होगा क्या या क्या नहीं वो देख लेते हैं. कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये पावर प्लांट इज देयर एंड टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट. ठीक है, टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट? टेल मी what is the meaning of township and area development? Means what they are going to do in this particular area. नहीं बता रहे हो? Developing the residential area. Yes, not the residential area. In fact, township and area development means there would be a commercial mixed land use. They would undergo a mixed land use. Commercial होगा, residential होगा, tourism होगा, सब कुछ होगा. ठीक है, तो such kind of tourism area development program has been initiated. अब इसके फायदे क्या हैं? Government is giving that it is very beneficial, while the environmental experts and these environmental activists, these are up in the arms saying that a lot of devastation has been done. Why? What is the urgency and what is the need to make this particular pristine and ecosystem such a putting such a ecosystem in a disturbing phase? Why? Government is saying that it would be important because of strategic location. Strategic location में है ये project, which means that this area, that is the Great Nicobar वाला area जो है, it is the area which accounts for 20 to 25% of the world trade. ठीक है, you know about the states of Malacca. ठीक है, states of Malacca से बहुत सारा trade and all होता है. So this particular area facilitates the 20 to 25% of world trade, plus 35% of the world oil is also passed through this area. So government is saying that if we have some project in this area, it would be an opportunity for us to have a better relation with the other countries that are using this passage. ठीक है, one is this, another is overseas. It is a way to counter the overseas countries. You know that a lot of countries, especially China, is getting aggressive in the Indo-Pacific region, especially in the Indian Ocean region. So government is defending it, saying that this particular initiative would work as a counter to Chinese activities in the Indian Ocean region, especially the string of pearls.
You might have heard about the string of pearls in the international relations and bilateral and all. ठीक है, तो it would be a, they are calling it that it would be a counter to China's string of pearls. ठीक है, what else? इसके अलावा they are saying, दो ये हो गए. तीसरा पॉइंट they are saying that it would turn out to be a huge hub for tourism and that will bring in lot of revenue for the locals as well as for the government. Second was, Ganesh, government is saying that lot of countries, especially China, is getting aggressive in the Indo-Pacific region. As China is getting aggressive in the Indo-Pacific region, and again they are coming out with some tactics like string of pearls to encircle India. So this is what they are doing. This would be a counter to the Chinese initiative. Sir, can we add this to relevance of rimland theory in optional? Yes, Debarga, you can also add this point there. True. In fact, if you are writing this, they would also appreciate you because you are linking the current and contemporary issues with the theories that have become a part of a static. ठीक है, ये अच्छा रहेगा अगर करते हो तो. Can't we make artificial island? Yes, we can make the artificial island, but artificial island is also it's not easy to make the artificial island. Lot of ecosystem disturbance would also be there. ठीक है, नेचर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो आप कर ही रहे हो if you are making the artificial. Rather than making the artificial island, what India needs to do is that they should reclaim the part of mangroves, Sundarbans and some other small islands which are already submerged in the sea. ठीक है, उसको reclaim करें rather than making the new artificial islands. ठीक है, तो we were saying that this place would also become the hub of tourists क्योंकि this place has a lot of potential. Scuba diving, beaches, ठीक है, adventure tourism, ये सब यहाँ पे available होगा. And another is that this place is also near or in proximity to Phuket, that is Bangkok Island and all. ठीक है, these are the places that are in close proximity to this area. So there is a high probability that the tourism will take a shoot once all these projects will be completed. ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, ये फायदा बताया उन्होंने. ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर आल्सो रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. वो उनकी कुछ अगली अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो जो बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर ये हो गया तो देयर विल बी द लॉस ऑफ, देयर विल बी क्या हो गया, दे आर सेइंग कि yes, there will be the loss of fertile cover or fertile land. ठीक, yes, it would be a issue of security versus ecological sustainability, you can say. ठीक है, there will be loss of fertile land. और क्या होगा, mangroves will be completely uprooted at, because just near the place of mangroves they are going to build a port. So the construction of that port is obviously going to disturb the mangrove ecosystem. Mangrove would be disturbed. ठीक है, फिर क्या होगा, सीवेज प्लांट्स वगैरह लगेंगे यहाँ पे. तो सीवेज प्लांट से क्या होगा, सीवेज प्लांट्स वुड डाइवर्ट all of their sewage waste into the nearby water bodies and that ultimately leads to the contamination, eutrophication and all होगा. और उसके बाद algal bloom and that's it, dead zones. ठीक है, तो वो चीज आएगी यहाँ पे, eutrophication होगा, sewage bodies, discharge of sewage into water bodies, discharge of sewage into water bodies. और क्या होगा, you might have heard that बड़ी एक famous species है यहाँ पे, leatherback turtle. Yes, I was just about to make an argument regarding that. Leatherback turtle जो है, leatherback turtle is one of the famous species found in this Nicobar area. If these projects come into the limelight, this will lead to the artificial illumination, artificial lightning or artificial illumination. ठीक है, this artificial illumination or these artificial lightning are going to disorient and disturb the leatherback turtles, and it won't be easy for them to make their nestings and to do hatchings.
ठीक है. So obviously there will be the loss of biodiversity. Yes, nature's beauty, you are right. It will be the loss of biodiversity. ये point हो जाएगा environmentalist के according. और बताओ कुछ. और environmentalists are saying that this place is close to the seismic area. This place is close to the seismic area, and this particular area is vulnerable to seismic activities. So there is a probability that in the future this would see a severe disaster like situation, frequent disaster. Yes, Ibrahim, you are right. ठीक है, तो seismic areas के लिए they are also raising the issue. Another is that Champagnes. I have already told that Champagnes are the ones who are the major tribes living in this area. They are saying that because this when the project was in its initial stage, these Champagne tribes withdraw their consent on this particular project. Why? Because of the lack of transparency in this project. But still government ignored, sidelined them and proceeded with their plan. So this is also the violation of Forest Rights Act. This is also the violation of Forest Rights Act, in which it is clearly mentioned that local or indigenous communities are the guardians of these ecosystems, and any decision would be taken while bringing them in confidence. Okay, but it has not been done here, so there is a violation of Forest Rights Act in the letter as well as in a spirit. ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा. और बताओ कुछ याद आता है तो आपको. वन मोर इज हेल्थ. हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे इनके ऊपर. हेल्थ रिलेटेड इशू होगा फॉर Champagnes एंड ट्राइब्स, बिकॉज these Champagne, Nicobaris and other tribes, if they are living there, they have a very limited contact with the outsiders. They didn't even like to contact and interact with the outsiders. So obviously if somebody outsider is coming, if there is an influx of people from other part of the country, so there is high probability that this particular tribe will get affected or infected, or they become more vulnerable to diseases. ठीक है, they will be more vulnerable to disease due to all these influx of outsiders. And you know, ये तो पता ही है कि tribals जो है ना, they are conservative, they are of conservative ideas, they don't want to get mingle with others. So it would one is that their local culture would be completely eradicated over the period of time. Another is that there is a high probability that these guys would be vulnerable to the new diseases that are emerging in our here and there market and all. Pollution तो रहेगा ही सोमदीप, वो तो ओवरऑल है, सीवेज वगैरह वो सब. ठीक है, so all these points are irritants in this project, while the government is also claiming and boasting itself that they have taken a good initiative because it is countering China. It is helping them to have a strategic location close to this place, as this is one of the route which is a passage for the 20-25% of trade all over the world. Previous slide show करना. Previous slide में क्या करोगे देख के, कुछ ऐसा है ही नहीं. ठीक है, so this is all about this. Previous slide चाहते हो तो previous slide दिखाते हैं आपको. नीति आयोग prepared a draft report for social impact for Greenfield International Airport. ठीक है, anything you want to suggest me regarding this particular project, or anything that you want to ask about this, or is there any point that we have missed up? Social impact वाली लाइन कॉपी करनी है. ओके, कर लो. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट थी जिसमें, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि देयर वाज सम कंसेंसस दैट नीड्स टू बी टेकन. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मींस कि क्या इम्पैक्ट होगा सोशल लेवल पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का. तो उन्होंने जो अपने आइडियाज दिए थे, जो उन्होंने अपने जो ओपिनियंस दिए थे, दैट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, और यही जो है इसकी बस रिपोर्ट है. ठीक है, तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Social impact. Okay, yes. Next is underground coal gasification. Recently this has been a news in the PIB. Way forward. Yes, way forward क्या होगा सौमदीप, आप ही बताइए. Way forward is very easy. फिर वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
local and indigenous people's opinions and their lives matter. They need to be incorporated into it. Environmental impact assessment should be taken seriously. ठीक है, और इतनी सारी जगह है डेवलपमेंट करने की. ऑल्दो ठीक है, गवर्नमेंट आइडिया इज ऑल्सो राइट कि वी वांट कनेक्टिविटी ऑफ दिस आइलैंड टू द मेनलैंड, बट as this particular area is somewhat very isolated one, and the people living in those regions they didn't even realize that they are under the sovereignty and jurisdiction of India. So कुछ और भी किया जा सकता था. There was not necessary, अगर हमें इसको strategic location को utilization करना है, so there was no need to make this township area and development. What we could have easily make it a command theater area. ठीक है, already we have one there. So rather than building all these things कि एयरपोर्ट भी होगा, पावर प्लांट भी होगा, टाउनशिप भी डेवलप होगी, ठीक है, वही दिल्ली या किसी गुड़गांव या किसी बड़े शहर की तरह क्यों बनाना है उसको. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज. सर इन जियोपॉलिटिक्स विल एनवायरमेंटलिज्म मैटर? नहीं, कोई एनवायरमेंटलिज्म मैटर नहीं करता जियोपॉलिटिक्स में. वहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स मैटर करेगी. तो वही है, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एनवायरमेंट वाले अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, एनवायरमेंटल वाले कह रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एनवायरमेंट तबाह हो गई. पॉलिटिक्स वाले कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में हमें वी हैव टू काउंटर चाइना, वी हैव टू मेक अरेंजमेंट सो दैट ओवरसीज नेशंस कुड नॉट एनसर्कल अस. ठीक है, वो अपना एक आइडिया दे रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन. दिस वाज द न्यूज ऑफ PIB that Ministry of Coal have initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification. सबसे पहला प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड. एंड व्हाट इज कोल अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन? बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ड्रिल होल्स हैव बीन डन एंड स्टीम और एयर or oxygen is injected into the coal mines at a very high temperature of around 1000 degree Celsius. ठीक है, उस डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पे उसको सेंड किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, due to which the coal present inside the ground is melted and it converts into the another gas. ठीक है, this coal converts into a gas that is syngas. एंड सिनगैस जो होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, दिस इज अ वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द कोल इनटू अ सिनगैस. कैसे? फर्स्ट अ होल और ड्रिल्स हैव बीन डन, देन एयर, ऑक्सीजन और स्टीम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर of around 1000 degrees Celsius is being injected into the coal mines so that this coal can be transformed into a syngas, and once the syngas is turned up it will be transported and taken away. ठीक है, so syngas is a combination of methane, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide. ये एक नया तरीका जो है इजाद किया है और फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया है इसमें झारखंड में. ठीक, अब इसके फायदे क्या है? वन है इसका कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. कैसे? जो सिन गैस ऑब्टेन होगी, दिस सिन गैस और जो स्टीम हमने यूज की है, दैट विल बी यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइंस. ठीक है, एंड दीज टर्बाइंस, आपको पता ही है, टर्बाइन मूव करती है तो फिर जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. The same process will take place here also. ठीक. Next is feedstock. Syngas. Syngas can be used as a feedstock for production of methanol, hydrogen और ammonia. ठीक है. This could be used as a feedstock for these three things also: methanol, hydrogen and ammonia. ओके, ये हो गई 3 चीजें. एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज, वन एडवांटेज इज दैट नाउ इट इज इजी टू एक्सेस दोज माइंस आल्सो व्हिच वर डिफिकल्ट टू माइन. ठीक है, वी कैन नाउ मैनेज
unmineable areas. ठीक है, it was difficult earlier, it was very difficult to mine the coals, but now with this process the coal is completely transformed into syngas and same can be used for different purposes. However, the byproducts of this particular process depends upon कि temperature कितना था, pressure कितना था, and what type of coal was there. It is not necessary that every time the same byproduct would be obtained. Although syngas will be obtained, syngas is the major one, but not necessary that every time the byproducts apart from syngas would be the same. It all depends upon the varying temperature, pressure, कितना कैसा coal था and all. ठीक है. So one is the advantage that it would be easy now to manage unmineable areas, those areas which were difficult to mine. ठीक. दूसरा पॉइंट है इसका कि जब कोल को माइन करते हैं, जब when we are mining the coal, so there is a lot of cost that is involved in it, like transportation cost, extraction cost, फिर माइनिंग को उसको वॉश करना, धुलाई करना. ठीक है, so that was little bit costlier, but this particular process has reduced the cost. ठीक है, so cost is now reduced, or you can cite it reduced capital expenditure. Capital expenditure is now reduced because the many processes that were part of a coal mining and coal extraction is now no more the part of this process. कोल होगा, completely transform हो जाएगा गैस के अंदर, that's it. ठीक है, और उसको हम यूज कर लेंगे एज पर वैसे ही तरीके से जैसे कोल को यूज करते थे. ठीक है, तो रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस भी कम होंगे. एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस और द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इज आल्सो लेस बिकॉज व्हेन वी वर यूजिंग द कोल इज बीइंग वॉश्ड, कोल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पानी, इट कॉन्टामिनेट्स अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी. अंडरग्राउंड वाटर वुड नो मोर बी कंटामिनेटेड टू दिस एक्सटेंट. ठीक है, ये हो गया. और कुछ इसके अंदर, एक मिनट. ठीक है, ये हो गया इसका एडवांटेज बता दी. डिसएडवांटेज बता देता हूं क्या है. थ्रेट टू वर्कर्स लाइफ विल बी लेस. यस इब्राहिम, द थ्रेट टू वर्कर्स लाइफ विल आल्सो बी लेस बिकॉज अर्लियर व्हाट इज हैपनिंग, वर्कर को हैज टू एंटर इनटू अ स्मॉल होल टू माइन इट आउट. so this will also be a less threat or completely no threat to the workers life. ठीक है, yes, good point. इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज ये एक वो है और नीचे कोल था. सपोज दिस एरिया में हमने कोल था, यहाँ पे कोल था और हमने यहाँ पे ड्रिल करके इस कोल को निकाल लिया. तो व्हाट विल हैपन, दिस विल क्रिएट अ वॉइड. दिस विल बी नाउ अ वॉइड बिकॉज नाउ देयर इज नो मोर कोल लेफ्ट. The coal is being transformed into a syngas and this has created a void. This void creation can lead to the, ये हो सकता है कि आने वाले समय में adjoining rocks would collapse. समझ रहे हो आप? Yes, students, are you getting the idea that if void is created here, there might be a possibility that in the coming days or years, the surrounding rocks and all can be collapsed. ठीक है, ये इसका एक जो है प्रॉब्लम हो सकता है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. बाकी ओवरऑल इसके जो है बेनिफिट्स बताए हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एंड ऑल. उसके अलावा तो और कुछ है नहीं. ठीक है, इसकी एक चीज बता देता हूं कि गवर्नमेंट इज एंथुसियास्टिक अबाउट दिस प्रोग्राम एंड दे आर सेइंग recently they have initiated, not recently means 2-3 years back, national coal gasification project, in which they have decided that 110 metric tons of coal will be liquefied in this manner by 2030 तक. they will use 110 metric tons of coal through this manner. ठीक है, and they have also invested 85,000 crores to ensure there must be a public-private partnership for this project. ठीक है, and CIL, that is Coal India Limited, and BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited, these are the companies that have come forward to establish a joint agreement with the private players. ठीक है,
national coal gasification project, in which it was decided that we will liquidate around 110 metric tons of coal by the year 2030. Similarly, इसके अंदर 8500 crores has already been pumped in so that they could give a boost to this particular project through public private partnership. And Coal India Limited and BHEL, that is Bharat Heavy Electronics Limited, has come forward to enter into their joint venture agreements. ठीक है, इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं खास. ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट है. Although this can be asked in form of science also, or they can ask also in form of environment question. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की है इसमें. ठीक, नेक्स्ट इज दिस ऑफशोर विंड एनर्जी. देखो ये ऑल्दो दिस प्रोजेक्ट, मैंने पर्टिकुलर उसको, जो कि द हिंदू बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल था कि गवर्नमेंट अप्रूव्स वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ठीक है, offshore wind energy projects, you already know, offshore wind energy projects are those projects that are situated in the shallow areas or the water bodies away from the ocean or to the coastal areas. And India has around 76,000 kilometers of coastline. So India has a huge potential to tap the offshore wind energy projects. ठीक है, अगर विंड की बात करूं तो अभी हम विंड की एनर्जी के उसमें 4th नंबर पे हैं. We rank 4th in the world in terms of wind energy power generation, or total energy installed, that is 46 gigawatts. 46 gigawatt is the energy installed, the wind capacity in India. ठीक है, ये सब बातें हो गई. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग. कोई बताएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग होती क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, yes, what is viability gap funding? सिर्फ ये viability gap funding की वजह से ही मैंने दिस टॉपिक को I have picked up, so that you should know कि offshore wind energy projects के अंदर government has introduced the clause of viability gap funding. Although this viability gap funding must be the part of economics, but here we are considering it because of this has been now included in wind energy projects. Yes, anyone please, बताएगा कोई, या नो ही लिख दो कि मैं नहीं बताऊंगा. Okay, Sachin is an honest guy, he says no idea sir. Others are introverts. Shortage in funds to be paid by government. Okay, fine, ठीक है, कुछ हद तक. Viability gap funding means this clause is used for those infrastructure projects that are economically justified. Economically they are justified, but they are not financially viable. ठीक है, financially viable नहीं है, but they are economically justified. So to invest or to boost or to give a boost to these infrastructure projects, viability gap funding clause has been used. Wait, क्या बता रहा मैं? हाँ, viability gap funding means the projects that are economically justified but they are not financially viable. तो इसमें होता क्या है कि suppose there is a project, government has come out with a, government says that a rural hospital, that there needs to be a rural hospital. Yeah, there needs to be a rural hospital and we need कि कोई private investor should come here and invest in this particular project. So they will, what they will do, they will go for competitive bidding. ठीक है, suppose the overall cost of this rural hospital is 10 crores.
10 crore money is required to build this particular hospital, and they have invited a few companies to make a competitive bidding. Company A says कि मैं इसको 8 करोड़ रुपए में बना दूंगा, and company B says that I will complete it in 7 crores, and the rest of the money you have to give me in form of viability gap funding. ठीक है, viability gap funding. Similarly, this company is saying that give me 8 crore rupees, the rest 2 crore government needs to give to me in form of viability gap funding. So both these companies have made a competitive bidding. So obviously the government will go with this one because they are the ones who are doing it at 8 crore. Here the viability gap funding for government would be 2 crores only, while for the B company, if government goes with them, the viability gap funding would be 3 crores, means there would be loss of 1 crore for the government. So this is called as the viability gap funding, and this particular clause has now been introduced even in the offshore projects. ठीक है, समझ में आ गया होगा सिंपल. ऑफशोर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं वो देखो. ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कुछ एडवांटेज बताएगा कोई? ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के एज कंपेयर टू ऑनशोर. ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में ऑफशोर के एडवांटेजेस क्या होंगे? Anyone? No one? ठीक है. ऑफशोर विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट एक तो ये होगा कि दैट जो यहाँ पे पूरा मशीनरी लगेगा. ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज ह्यूज. ठीक है, देयर विल बी द बिग टर्बाइंस बिकॉज देयर इज नो सच limitation of land, and limitation तो है नहीं. There is a large area available for them, and the wind farms that are offshore are always huge and large in number as compared to the onshore wind energy projects. So if the wind farms are big, obviously the turbines would be big and they would able to generate more electricity. ठीक है, the more electricity would be generated by them. ठीक. Another is that the wind that is blowing over the ocean is always stronger as compared to the wind that is flowing over the land. ठीक है, wind flow is also stronger over sea. ठीक है, as the wind flow is stronger over sea, obviously there is a maximum potential for generation of energy from the offshore wind energy. Yes, no obstruction would be there. ठीक है. less noise pollution as compared to, और if अगर pollution है भी तो the pollution तो का जो ज्यादा रोने वाले लोग हैं वो तो आदमी है ना, जानवर तो कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो there is a less noise pollution when we are comparing the offshore wind energy also. ठीक है, व्हाट एल्स? कुछ और है? कुछ और आइडिया किसी को इसके अलावा? यस, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर. सचिन, यू आर राइट. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट capital investment is huge capital investment is required. And one such advantage of offshore wind project is that there is no delay in it or no land acquisition issues. No land acquisition issues occur when you are developing any offshore projects because it doesn't demand the land. ठीक है, onshore needs land acquisition. Yes, ठीक है. Yes, someone is saying yeah, huge investment is required. Yes, true. The investment is huge as compared to the onshore projects. दूसरा, मेंटेनेंस भी ज्यादा है. Maintenance of offshore project is high because the entire apparatus of wind farms
can be rusted. Sound problem. ठीक है. Entire these offshore wind farms can be rusted because of availability of moisture, और moisture से जो है they will be rusted, so obviously they need more maintenance than the onshore wind projects. ओके ठीक. तो ये हो गया. इसमें एक इसके लिए बता देता हूं कि नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है हमारी. नेशनल ऑफशोर wind energy policy that was conceived in 2015, where we have determined that we will exploit or tap our long coastline within the range of 76,000 kilometers so as to increase the potential of wind energy generation. ठीक है. Somdeep, I think now the sound might be coming properly. ठीक है. नेशनल विंड ऑफशोर प्रोजेक्ट. अनदर इज सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी. सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी मीन्स द एनर्जी दैट इज बीइंग जनरेटेड थ्रू सोलर एज वेल एज विंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम लाइन्स. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डन थ्रू सेम लाइन्स. This is also the initiative that has been taken recently. ठीक है. और डिसएडवांटेज में एक चीज और लिख सकते हो आप लोग कि जो ट्रांसमिशन का जो प्रॉब्लम है ऑफशोर में ज्यादा है. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लाइंस इज डिफिकल्ट इन ऑफशोर. ठीक है. Offshore projects में the transmission is bit of difficult, while in onshore the transmission is smooth and easy. इसमें देख लेना. नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है. in 2015 it was launched so that we could tap the potential over 7600 kilometer long coastline and develop better offshore wind farms. ये है solar wind hybrid policy, which means that the energy that we have been generating through solar as well as wind can be transmitted through the same lines. So we won't have to make a huge investment separately for the solar as well as wind. Both can be transmitted through same lines. In this manner they are trying to cut down their expenses. ठीक है. ये हो गया. इसमें कुछ बताना है, कुछ पूछना है? Anything else? फिर नेक्स्ट की तरफ चले. Yes. Students, please tell me exactly what we have to do. Do we have to discuss anything of the previous topic or shall we go ahead? Continuously कुछ ना कुछ लिखते रहा करो यार. बातें बातें करते रहा करो. मुझे लगता रहता पता नहीं कहाँ. एक मिनट चल रहे हैं, बस आगे ही चल रहे हैं. ठीक है. फाइन. So next topic is this Ramsar sites. Nagi and Nakti. These are the two bird sanctuaries that are a part of Bihar's district Jamui. ठीक है. Jamui is a district. We have also done one case study on that. ठीक है. बिहार के Jamui district में these two bird sanctuaries have now become the Ramsar sites. ठीक है. Nagi and Nakti, they are the man-made wetlands. और यहाँ पे वी ऑल्सो हैव अ डैम्स. नागी डैम भी है एंड नक्टी डैम भी है. ठीक है. एंड विद द इंक्लूजन ऑफ दीज रामसर साइट्स द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया आर नाउ 82. ठीक है. द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया आर नाउ 82. जमुई में है, मैन मेड वेटलैंड्स है, देयर आर ऑल्सो डैम ऑन दैट. एंड एज दीज आर द बर्ड सेंचुरीज देयर इज ऑल्सो एनुअल बर्ड फेस्टिवल दैट takes place every year at this place. ठीक है. एनुअल बर्ड फेस्टिवल के लिए फेमस है. रामसर साइट्स हैं. रामसर कन्वेंशन, यू नो, पहले रामसर कन्वेंशन वाज कॉल्ड एज द कन्वेंशन
for the wetland importance, but later on its name was changed to Ramsar Convention. ठीक है, Ramsar Convention कब? 1975. 1975 में this convention was held, and Ramsar is the name of a city in Iran. In Iran there is a place called Ramsar because the convention was held there. That's why this convention got a name Ramsar. ठीक है, अब ये जो है आपका नागी एंड नक्टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड डाइवर्सिटी एरिया. ठीक है, इट इज इन अ गैंगटिक प्लेन. ठीक है, इट इज इन बिहार, इट इज इन अ गैंगटिक प्लेन, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट बर्ड डाइवर्सिटी एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हैज डिक्लेयर्ड दिस एज इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया. यस देवरगा, इकोसिस्टम अप्रोच, यस, ठीक है, ठीक. दिस इज द इंपॉर्टेंट बर्ड डाइवर्सिटी एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. डैम्स आर आल्सो लोकेटेड क्लोज टू नागी एंड नक्टी and Ramsar site. Now India, the number of Ramsar sites has reached to 82, and maximum Ramsar sites in India is in which state? Maximum Ramsar sites in India is in Tamil Nadu and then Uttar Pradesh. ठीक है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु फर्स्ट पे है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, यूके हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट दैट इज अराउंड 175. ठीक है, और एक और चीज है कि इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया इसको बोला है. क्यों बोला है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं. इफ सम साइट, either it is a man made or human made, if any such site is fulfilling the parameters that is being laid down by this particular NGO, then that would be called as important bird biodiversity area. और इसके पैरामीटर्स क्या हैं कि that if there is a significant number of species that are globally threatened as per IUCN, then it will be called as important biodiversity area. Significant number of species that are globally threatened as per the IUCN, अगर ये होगा तो it will be called as important bird biodiversity area. If this particular site has a significant number of species that are restricted to specific biome, then it will be called as the important bird biodiversity area. If particular site has a significant number of birds or migratory birds, then again it will be called as the important bird biodiversity area. ठीक है, so there are few parameters that have been laid out by this particular organization, that if the particular site is fulfilling all those conditions, then only it will be listed as a part of important bird and biodiversity area. ठीक है, इसमें कुछ बताना है क्या? ठीक है, रामसर की बात आ रही है तो मैं एक और चीज बताता हूं कि रामसर के अंदर एक और लिस्ट में होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. Montreux record. In Ramsar Convention, there is a word that is Montreux record. Montreux record means it is a list of all those wetlands which need immediate attention because something wrong is happening in these wetlands, either due to human effect or might be due to some traditional changes or due to some technological changes that have occurred over a period of time. So wetlands हैं इंडिया के that are a part of Montreux record. One is Ecology National Park and another is Loktak Lake of Manipur. ठीक है, लोकताक लेक ऑफ मणिपुर एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क. ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताना है एक्स्ट्रा या कुछ इतना? ठीक है, वन मोर थिंग इज दैट इंडिया के अंदर इंडिया गवर्नमेंट विल regulations will put into effect only on those wetlands that are listed under the Ramsar Convention. ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन में है केवल उसी के ऊपर रेगुलेशन लगाई जाएगी. If some wetland is under the Coastal Protection Act, then there will be no regulation. Look, paddy fields. Paddy field is also a wetland, but there will be no regulation in it because
it is not listed in Ramsar Convention. No wetland will be regulated if it is listed under Wildlife Protection Act 1972. Only those wetlands will be regulated which are in the list of Ramsar site. ठीक है, तो ये क्वेश्चन की एक है वो बन सकती है लाइन कि all the wetlands have been regulated, only those wetlands have been regulated, ऐसा कुछ करके they can try to confuse you. ठीक है, फाइन. इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए. 2 बर्ड सेंचुरीज आई हैं बिहार की एडेड. दे आर इन द गैंगटिक प्लेन्स, नागी एंड नक्टी. दे आर फेमस फॉर द बर्ड्स. एक और चीज है इसके वहां, एक बहुत फेमस जो बर्ड्स यहाँ पे मिलती हैं वो है बार हेडेड गूस. बार हेडेड गूस. And you know the number is around 1600 because of huge number that the officials have recorded there. That's why it has been included in this Ramsar site. ठीक है. Apart from it, there are a lot of Eurasian. Some of the birds have been migrated from Arctic, Russia, North China, and all. Some birds have also been observed there. ठीक है. Birds that have been usually seen in the Arctic and all have also been seen there. That's why this particular site has been included in the list of Ramsar wetlands. And bar-headed goose, this is the number of the bar-headed goose at this particular site is 1600. This is also one of the reasons for including it in this list. Once repeat the last line of wetlands. Last line of the wetlands थी वो ये थी कि wetlands will be regulated by Indian government, but only those wetlands that have been listed in the Ramsar Convention. If some wetland is listed under the coastal regulation zone, that would not be regulated. If some wetland is listed under the Wildlife Protection Act, that would not be regulated. ठीक है. Even paddy fields is also considered as a one form of wetland, but that also won't be regulated because that is also not in the list of Ramsar sites. ठीक है. इसमें इतना ही और कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज द यूनेस्को रिलीजेस द, एक मिनट, ये अंटार्कटिका भी है. Antarctica Treaty. Recently, Antarctica Treaty was also signed. Not signed. In fact, this 46th Antarctic Treaty was held in India. ठीक है. तो this was held in India in Kochi. तो देख लेते हैं कि Antarctic Treaty है क्या. This Antarctic Treaty was first, the meeting was held in 1959 in Washington. ठीक है. एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1961. ठीक है. जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो इसके रियल मेंबर्स होते हैं, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स, सम ऑफ द कंट्रीज आर ऑब्जर्वर कंट्रीज, बट जो रियल मेंबर होते हैं दैट इज द कंसल्टेटिव पार्टीज. उनको ये बोलते हैं कंसल्टेटिव पार्टीज. और कंसल्टेटिव पार्टीज का मतलब है मींस दोज पार्टीज हु कैन मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द अंटार्कटिक. ठीक है. Only those parties who can make a decision about this Antarctic Treaty, they are called as consultative parties. Or India is also a consultative party. India became a consultative party in 1983. और 1983 में ही कंसल्टेटिव पार्टी बनने के बाद ही we have set up दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन. उसके बाद we have set up भारती, मैत्री. ठीक है. Although this Dakshin Gangotri is now decommissioned, it is now decommissioned. Earlier it was commissioned, but now it is decommissioned, and soon Maitri is going to be replaced by Maitri 2. Maitri is going to be replaced by Maitri. Yes, Maitri is there, but soon there will be the Maitri 2. ठीक है. कंसल्टेटिव पार्टीज. अच्छा, ये मीटिंग जो अंटार्कटिक ट्रीटी की मीटिंग हुई है,
या जो कंसल्टेटिव पार्टीज हैं, इसका बेसिकली वो क्या है, इनका बेसिकली जो कहना है वो ये है कि अंटार्कटिक जो है दैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, ठीक है, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, radioactive material and army deployment. Nobody is allowed to deploy army, nobody is allowed to carry out the nuclear explosion or some radioactive material explosion, ठीक है, plus complete neutralization of territories, ठीक है, टेरिटरीज पे भी कब्जा वब्जा करने की ये बातें तो छोड़ दो। तो ये इस अंटार्कटिक ट्रीटी का मेन प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर इसको फॉलो करना है। इंडिया हैज आल्सो पास द अंटार्कटिक एक्ट 2022। अंटार्कटिक एक्ट 2022 वाज पास्ड बाय इंडिया टू शोकेस that we completely abide or we completely are going to follow the commitments that have been laid out in this Antarctic Treaty. ठीक, so this was held recently in Kochi and was held under the auspices of Ministry of Earth and Science. The organization was National Center for Polar Research. ठीक है, यही था, इसमें कुछ नहीं है। अंटार्कटिका की ट्रीटीज या अंटार्कटिका का कुछ रिलेटेड इशू इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉमन सोर्स है that everyone is eyeing for it and due to the global warming and all lot of things are happening there, ठीक है। Next is UNESCO releases the state of ocean report. Recently a report has been released by UNESCO, that is the state of ocean report, और इस रिपोर्ट में इन्होंने दो तीन चीजें बोली हैं। थॉइड ग्लेशियर इज मेल्टिंग, यस देबरगा, थॉइड ग्लेशियर इज मेल्टिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। और इस रिपोर्ट में दैट इज द स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, इसमें थॉइड ग्लेशियर का एक जिक्र आएगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट की कुछ वो हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं दैट हैव बीन रिवील्ड बाय देम। वन इज दैट सी वार्मिंग, दिस रिपोर्ट इज सेइंग दैट द सी वार्मिंग हैज बिकम ट्वाइस in the last 30 to 40 years, ठीक है। सी वार्मिंग हैज बिकम doubled in the last 30 to 40 years, and the major hotspots where the sea warming has observed is the Mediterranean, North Atlantic and Southern Ocean, ठीक है। These are the areas where the warming has taken place in an exponential manner as compared to the other places, ठीक है। सी वार्मिंग हो गई। नेक्स्ट इज सी लेवल राइज। दिस रिपोर्ट स्टेट्स दैट द सी लेवल राइज इज देयर, यस ये तो सभी जानते हैं, बट द मैक्सिमम सी लेवल राइज इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द melting of glaciers near Greenland and melting of Thwaites glaciers, as Deberga is saying, ठीक है। तो this report is also confirming this fact that sea level rise is increasing because primarily because of two reasons. One is the melting of glaciers near Greenland and another is the melting of glaciers that is Thwaites glacier near Antarctica, ठीक है। दो पॉइंट हो गए ये। तीसरा पॉइंट जो एक बोलती है ये रिपोर्ट, इट सेज डीऑक्सीजनेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट डीऑक्सीजनेशन। अकॉर्डिंग टू देम, ड्यू टू द rise in temperature, heat related stress that have been occurring regularly in the seas and oceans, there have been decreased concentration of oxygen, and this is condition is called as hypoxia. हाइपोक्सिया, इससे हो क्या रहा है, इससे आपका साइक्लोन्स डेवलप हो रहे हैं, सॉरी वो तो सी लेवल राइज से हो रहे हैं, सी लेवल राइज से हो रहे हैं। दिस इज hypoxia where there is a concentration of O2 has been declined,
and it is resulted in the formation of dead zones. ठीक है, it is resulted in the formation of dead zones, और dead zones को दूसरे वर्ड में biological deserts भी बोल देते हैं, biological deserts. ठीक है, ये हो गया. एक और चीज है इसमें, कह रहे हैं कि क्या डिग्रेडेशन हो रहा है. मैनग्रूव्स, tidal grasses, sea grasses have been degraded by 25 to 30% since 1970. ठीक है, 1970 से अब तक जो मैनग्रूव्स है, टाइडल सी ग्रासेस हैव बीन डिग्रेडेड बाय अराउंड 25 to 30% सिंस 1970. ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, यही 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. बाकी जो सी लेवल राइज हो रहा है या वार्मिंग जो हो रही है, अगर वार्मिंग हो रही है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी मोर साइक्लोन्स इन द फ्यूचर. ठीक है, सी वार्मिंग हो रही है तो मोर साइक्लोन्स होंगे. इसके अलावा एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है. ओशन एसिडिफिकेशन मीन्स द CO2 sink. You know, the ocean act as a CO2 sink or a carbon sink. So as the acidification is increasing, it will impact the coral bleaching. Coral bleaching impact means again tourism, livelihood, coastal communities, fisheries, these all will be impacted. तो उसी के बारे में ये सब बता. तो क्या होगा, कुछ बताओ आप मुझे. वे फॉरवर्ड में आप लोग बताओ कि कुछ क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ओशन के रिगार्डिंग. यस, ओशन के रिगार्डिंग व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस. Can anyone? No one? Nobody wants to contribute? Reduce greenhouse gas so that less melting of glaciers. ये तो ओवरऑल वो हो गया. लेस प्लास्टिक डम, ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि लेस डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. इसमें एक बार बार जो न्यूज़पेपर वगैरह में और एडिटोरियल में मैंने एक पढ़ी थी, तो वो काफी वर्ड भी जो है थोड़े से कीवर्ड टाइप है. मरीन स्पेशल प्लानिंग, मरीन स्पेशल प्लानिंग. मरीन स्पेशल प्लानिंग का मीन्स ये है कि वी शुड डेडिकेट और वी शुड डेजिग्नेट द पर्टिकुलर एरियाज फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क. मीन्स हमें डेडिकेट करना होगा कि ये वाला एरिया मैनग्रूव्स का है, ये वाला एरिया जो है ये रिसोर्स और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए है, ये वाला एरिया जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज फॉर सम अदर फिशरीज एंड ऑल. ठीक है, इन दिस मैनर वी हैव टू डिलिनिएट और वी हैव टू गो विद अ मरीन स्पेशल प्लानिंग. नैरेटिव वर्सेस यस यस, ठीक है. तो उस तरह की एक प्लानिंग जो हमें करनी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट 75% ऑफ द सी फ्लोर इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है, वो अनएक्सप्लोर्ड है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया. We should explore. This is the right time that we should explore it, so that if there is some more opportunity for us, then we could go slow with all these things. ठीक है, heat resilient corals, increasing overall resilience of oceans. Yes, कप्पा. Afforestation, mangroves. Yes, yes, ये सब पढ़ेंगे. Ocean literacy, ocean related literacy is also important. कि locals and the people should realize the importance of the oceanic resources. They must know that these are also these all resources have the same significance as the resources on the land and some other places. ठीक है, तो वो चीज भी देखनी पड़ेगी और इसको जो है अकाउंट में लेके आना पड़ेगा. इसके अलावा अगेन एंड अगेन आपने कुछ देखा होगा, ऑल्सो आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर दैट वुड बी अ नोबल इनिशिएटिव और नॉट, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक. बिकॉज
कुछ कंट्रीज ने तो इसके ऊपर उंगलियां उठाई हैं। जियो इंजीनियरिंग टेक्निक क्या होती है? जियो इंजीनियरिंग टेक्निक सुना है नाम इसका? मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, यस, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है वो? क्या है वो बताओ? ट्रॉपिकल क्वींसलैंड एम अप्लाइड। देखो बेसिकली होता क्या है ना, सिलिकेट पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर द ओशनिक वाटर, and what these silicate particle does is that they reflect the sunlight, they transfer the sunlight back to the place from where it has come. So these sunlight won't be able to absorb in the ocean. ठीक है, as it won't be able to absorb in the ocean, so there would be less possibility of these oceans getting acidified. ठीक है, so these silicate particles are reflecting the sunlight, transferring it back to it, the place from where it has come. So this is what the geoengineering technique is being used for. ठीक है, तो ये एक चीज है। ऑल्दो कुछ इसके impacts निकल के आए हैं सामने, पूरी तरीके से नहीं आया। Some of them are praising it, appreciating it, that it's a good technology that can be used to protect the oceanic resources, to preserve and to mitigate the oceanic acidification. But others are also saying that it could be dangerous for the coming generations. Next is sustainable development, UN Sustainable Development Solutions Network. ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट, UN Sustainable Development Solution Network released Sustainable Development Report 2024. This is the organization that is UNSDSN that releases the report, and it is releasing the report since 2016. ठीक है, what is the mandate of this report? This particular organization reviews the progress that countries have made in sustainable development goals. ठीक है, it is basically an idea to review the progress that have been made by countries in sustainable development goals, and if somebody is lagging, it is their objective or it is their duty to promote integrated approach and to consult or to help them also. ठीक है, लेकिन हेल्प करते हैं सिर्फ नाम मात्र की, वैसा कुछ नहीं है इनका। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे आर सेइंग दैट ओनली 16% ऑफ SDG टारगेट्स आर ऑन ट्रैक। 16% of SDG targets are on track. Only all other targets are not on a track. Especially जो है SDG 2, that is poverty and hunger, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। ठीक है, that is not on a track. SDG 14, life below water, it's not on a track, it's again in the poor form. SDG 15, life on land, again it is completely sidelined. ठीक है, इस तरह से SDG 11, that is smart cities or communities resilience. So these all sustainable development groups, sustainable development targets are, or goals are not on a track. Only 16% of the sustainable development goals are on a track. That is the information given by this United Nations Sustainable Development Solutions Network. And the countries that are leading in sustainable development goal is Nordic countries, where Finland ranks 1. Finland is first rank in implementing the sustainable development goals. ठीक है, BRICS have improved. BRICS countries have improved from their previous data, but still the situation is not much impressive. और least developed countries तो बिल्कुल lagging है, they are lagging behind. ठीक है, they are lagging behind. इंडिया का जो रैंक है इसमें that is 109 out of 166. This is the rank of in प्रोग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इतना ही है। इसका क्वेश्चन एक बार इसका आया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस का, कि रिपोर्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है कौन रिलीज करता है, इसके ऑप्शन में आए हुए थे 2-3 चीजें, तो यू हैव टू सी कि क्या है इसकी रैंक एंड ऑल और कौन सी कंट्री जो है लीड कर रही है। ओके फाइन, इसमें इतना ही और कुछ नहीं है, इसीलिए इसको उठाया क्योंकि इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो। दिस इज अगेन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, crocodile, because crocodile is also one of the favorite themes of UPSC और बार बार क्वेश्चन पूछा है crocodile के ऊपर, घड़ियाल के ऊपर, salt water crocodile and all। ठीक है, recently 17th of June, on 17th of June there was a World Crocodile Day। ठीक है, किसी का जन्मदिन था क्या 17 जून को? तुम लोगों में से तुम्हारा था? Seriously? Means you are a crocodile? It was a World Crocodile Day, okay? चलो, just joking. ठीक है, the World Crocodile Day was celebrated on 17th of June. Crocodile is the third largest illegal traded wildlife species. Yes, that's also a true fact. ठीक है, this was started in 1975. ठीक है, this crocodile conservation project in India was started in 1975 at Bhitarkanika National Park. Bhitarkanika National Park, that is in Odisha. There India have started this, और इंडिया के अंदर जो है only 3 types of crocodiles are found. These are the 3 crocodiles: मगर, salt water crocodile and घड़ियाल। ठीक है, only these 3 types of crocodiles are found in India. So you must have a specific information about all these 3, because UPSC can ask them, because around 2 to 3 times they have asked the question on crocodile। ठीक है, ये हो गया। Bhitarkanika National Park they have started। They have started it in Bhitarkanika National Park and overall 50th year has come in this year। ठीक है, इसके अलावा crocodiles are nocturnal animals। Nocturnal animals, ठीक है, they are also called as pylokilothermic। They are also called as pylokilothermic। Pylokilothermic means that they have a limited control over their body in terms of temperature। ठीक है, वार्म ब्लड एनिमल्स क्या करते हैं? दे कैन चेंज देयर बॉडी एज पर द टेम्परेचर, बट दे आर पाइलोकिलोथर्मिक, मींस दे हैव अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर देयर बॉडी व्हेन इट कम्स टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, भिटरकनिका नेशनल पार्क हो गया, नॉक्टर्नल एनिमल्स हो गए। ठीक है, और 3 तरीके के आपके जो है, एंड दिस भिटरकनिका नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट। दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट। Now I will talk about these. One is this, apart from this, इसे छोड़ दिया जाए तो this salt crocodile, all these crocodiles, so they open the mouth and manage heat। Yes, yes Ganesh, salt water crocodile को अगर छोड़ दिया जाए तो all other crocodiles, that is these 2 crocodiles can live in freshwater lakes, swamps, etc। ठीक है, बट दिस साल्ट वाटर क्रोकोडाइल नीड्स सॉल्टी वाटर, और इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न। दिस इज लीस्ट कंसर्न एंड आर फाउंड एट 3 प्लेसेस इन इंडिया। वन इज सुंदरबंस, अदर इज ये भिटरकनिका, and other is Andaman and Nicobar Islands। Okay, salt water crocodile, or in some places it is being written as estuary crocodile। Estuary crocodile, so it is found at 3 places। One is at Sundarbans, Bhitarkanika, Andaman Nicobar Islands, and the status is the least concern as per the IUCN। ठीक है, next is this one, magar। This one, magar। Magar would be the last one।
मगर ही कर लेते हैं। मगर के लिए जो बोला जाता है, स्टेटस इज वल्नरेबल, इट्स स्टेटस इज वल्नरेबल। मगर crocodile status is vulnerable and it is found in 15 rivers or 15 states of India, but its most favorable habitat is the Ganga river. Its most favorable habitat is Ganga river, but it is found around in 15 states of India. Status is vulnerable. Alligator is a simple one, सोमदीप, वहां पे तो इनकी बात ही नहीं हुई है. When you go deep into this, you will find that this is मगर, crocodile, घड़ियाल, salt water, और होगा एलिगेटर तो हमारे यहाँ नहीं है. एलिगेटर बहुत फास्ट रन करता है. That would mainly found in US and all. ठीक है. यस देवर का चंबल में जो है घड़ियाल मिलेगा आपको. ठीक. नेक्स्ट वन इज घड़ियाल. दिस इज घड़ियाल. It is found in the rivers of Chambal, Son, Ghaggar, okay, Gandak. So this ghadial is found in these places and this is critically endangered. This is critically endangered. ठीक है. This question has been asked many times के घड़ियाल will be seen or will be found in which all rivers. क्वेश्चन आया था एक बार. ठीक है. This is how these crocodiles are. This is the status of crocodile is also discussed plus घड़ियाल and all. ठीक है. It has a broader snout and लंबा सा है बिल्कुल कुछ अलग ही छिपकली टाइप का. ठीक है. Look at this मगर and crocodiles. Pictures देख लो so that it would be easy to remember for you, क्योंकि पिक्चर सामने होती है तो that helps you to visualize when you are in the examination hall. Saw like jaw. Yes. ठीक है. यही चीज है बस इसकी, और कुछ नहीं है इसमें. बाकी you know कि भितरकनिका नेशनल पार्क. Most important point is that Kendrapara is the only place in the world, that is in Odisha, where all the 3 crocodiles are found. Kendrapara, that is a place in Odisha, is the only place in the world where all 3 crocodiles can be seen. Okay, else apart from that, estuary crocodile requires salt water to survive, that is in Sundarbans, Andaman Nicobar Islands and in भितरकनिका. Rest घड़ियाल का मैंने बता दिया, found in Chambal, Gandak, Son and all. And this magar crocodile can be seen especially in Ganga river, but its presence has been seen around 15 states of India. ठीक है. भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक रामसर साइट है. ओके, रामसर साइट है. एंड इज द रिवर दैट आर ड्रेनिंग दिस रीजन इज ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा. ठीक है. पटसाला. So these are the major rivers that are discharging their waters into the भितरकनिका. रामसर साइट है और कुछ है नहीं इसके अलावा. Take a look of crocodiles as it is an important species for the examination point of view. Next is going for the next topic, that is Pench Tiger Reserve. It was in a news recently that this advanced artificial intelligence systems have been used for the detection of forest fires in Pench Tiger Reserve. AI का एक बहुत ही बेहतरीन यूज हो रहा है. और 2-3 दिन पहले जो है, I was reading a newspaper in which it was written that with the help of AI, a cell has been detected in a woman which has the potential to become a cancerous in the coming 5 years. Look at the innovation the man has did. कि 5 साल बाद जो सेल एक कैंसरस फॉर्म में डेवलप हो सकता है, उसको एआई ने आइडेंटिफाई कर लिया अभी. तो देख रहे हो कि मतलब कितनी ज्यादा साइंस डेवलप हो चुकी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से.
कि we have developed a system through which we can see that this particular part in our body or this particular cell would become cancerous in the next 5 years, so it's better to treat it right now rather than wait or leave this patient to its own. ठीक है, so this is how the AI has been evolving over a period of time, and there is a possibility that a lot of problems that have been cropping in our daily life would be resolved by these systems and all. So artificial system को use किया जाएगा for the detection of forest fires at Pench Tiger Reserve. Pench is a tiger reserve that is in Madhya Pradesh. Basically it is in Madhya Pradesh, but some part is also in Maharashtra. Some part in Maharashtra also. ठीक है, near Chhindwara district and Sioni district. ठीक है, look at this in map. Sioni and Chhindwara, these are the two. Yes, border पे है बिल्कुल. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेजिटेशन की फॉर्म, दे हैव अ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. Okay, Pench is the river that divides it into two parts. ठीक है, Pench river is dividing it into two parts. और कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आपकी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज यहाँ पे, दैट इज महुआ, सजाई, अमलतास. ठीक है, महुआ है, सजाई है, अमलतास, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज दैट यू कैन ऑब्जर्व हेयर. और इसका और क्या है, लेपर्ड्स के लिए फेमस है, लेपर्ड्स, स्लॉथ, बियर. ठीक है, बैम्बूज also grown. Bamboos grown wherever there is a water body in this park. ठीक है, near water bodies bamboos have been grown in Pench Tiger Reserve. इसके अलावा Pench, yes, one more point is the Pench is India's first dark sky park. India's first dark sky park, and it is Asia's 5th. What is dark sky park? Anyone? What is dark sky park? It is India's first dark sky park, while in Asia it is the 5th one. Stars are watched from there as there is a complete darkness. Here I are for the first time. Okay, Debaga, no issues. Yes, Ganesh is right up to some extent, because in this dark sky park means it restricts the availability of light. ठीक है, dark sky park means these parks restrict light, that is artificial light. Artificial lights को restrict करते हैं these parks, because light pollution is one form of pollution that is disturbing the natural animals, that is disturbing their navigation. ठीक है, and navigation disrupting their nestings. ठीक है, so this is also a form of pollution, light pollution. ठीक है, that is why it is called Asia का 5th again. This is the 5th in Asia and the first in India. That is the India's first dark sky park to restrict the pollution that have been occurring because of light. Okay, and you guys might have heard about this Rudyard Kipling book, Rudyard Kipling का जंगल बुक.
मोगली, रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक, जंगल जंगल फूल खिला है पता चला है टाइप, यस, बगीरा वाला, यस. This is based on Pench. The original setting, this particular story is about Pench Tiger Reserve. ठीक है, so there is nothing more to be discussed in this Pench Tiger Reserve. AI system, you can say AI system क्या कर रहे हैं, ये बताना भूल गया कि AI system with the remote satellites and imaginary, they are able to identify कि जो vegetation है particular area की, that is deforming or taking the place of such a vegetation which can easily catch the fire. With this, they will be able to detect that this forest is soon going to take a fire. AI algorithms will alert the authority, and authority will swiftly intervene into this, and if they might have been honest and if they might have been good ones, so they could somehow douse or they could take the corrective measures to retard this fire in this particular area. ठीक है, समझ गए? एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है इसके बारे में? क्लियर? यस, ऑनलाइन यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स एंड ऑल. Okay, everyone. So with this, we have completed the important topics that were the part of our environment syllabus in the month of June and the first week of July. Yes, देवरकर नहीं दे पाया क्योंकि कुछ टाइम थोड़ा सा इशू हो गया था. We will give definitely either tomorrow or on Sunday. ठीक है, आज भी नहीं हो पाएगा basically. Fine. So students, if you want to ask anything regarding all these topics or anything else that you have something to share with me, please tell me, else we are going to wind up the session as our current affair class is over now. Okay. Thank you everyone. Thank you. So we will meet again in another environment session, or those who are with us in geography optionals, we will meet on Monday for the case study and all. Till then, goodbye. Take care of you guys. Bye bye.